हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया स्टॉक मार्केट। सो गाइज, आज हम बात करेंगे स्टॉक टिप्स के बारे में। लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आपका प्यार और सहयोग आवश्यक है, तो सहयोग दीजिएगा। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइज, आज हम बात करते हैं स्टॉक टिप्स के बारे में। फर्स्ट स्टॉक है हमारा सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कंपनी फाइनेंशियल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। ओके, लेट्स मूव। सन फार्मा इंडस्ट्रीज NSE 1.23% with a target price of rupees 1175. The current market price of Sun Pharmaceuticals Industries is rupees 994. 1175 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। करंट मार्केट प्राइस 994 with a target price of rupees 1175. 1175 का टारगेट है। एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी आपको बाय करनी है। सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज incorporated in the year 1993 is a large cap company having a market capital of rupees 2,38,517.89 crore, operating in pharmaceutical sector। एक फार्मा कंपनी है ये। Okay, Sun Pharmaceuticals Industries key product revenue segment include pharmaceuticals and other operating revenue for the year ending 31st March 2022. Okay, financials. Okay, for the quarter ended 30 September 2022, the company has reported a consolidated total income of rupees 11,037.50 crore, up 2.54% from last quarter. Total income of rupees 10,763.90 crore and up 12.07% from last year same quarter. Total income of rupees 9,848.82 crore. Company has reported net profit after tax of rupees 2,260.17 crore in latest quarter. Okay. Okay. Company has SRBC and Company LLP as its auditors as on 30 September 2022. The company has a total of 240 crore shares outstanding. Okay, investment rationale. Earning impact will depend upon extent of contributions of 14 product. Okay, exempted from import alert and till what time frame exemption will continue. The brokerage see earning impact of not more than 2-3% over the last few years. Okay. Over the last few years, the company's dependency on US generics has reduced, and company's growth is more functional on US specialty, raw, and domestic pharma business, which continues to have strong growth visibility. Okay. Promoters FII Holdings. Prabhudas maintain its estimates and buy rating at target price of rupees 1,175 based on 26 by September 2024 earnings. Okay, promoters FII Holdings. Promoters held 54.48% stake in the company as of 30 September 2022, while FIIs own 14.95%, DIIs 19.47%. Okay.